স্বাগতম জানাইছো মই দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। নিজৰ পুত্ৰৰ চিতাভস্মলৈ নিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ ধৰ্ণাত বহিছে এজন পিতৃ, এজন বিজেপিৰ কৰ্মী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এজন বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ চিতাভস্মলৈ ধৰ্ণাত বহিছে আৰু কৈছে যে যদিহে এজন বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা হৈ তেৱে ন্যায় নেপায় তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰৰ পৰা আন কোনোৱে কি ন্যায় পাব। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। পুত্ৰৰ চিতাভস্মলৈ অন্নখনত বহিছে স্বয়ং বিজেপিৰ নেতা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এজন পিতাই আৰু এজন বিজেপি কৰ্মী, এজন পিতৃ, এজন বিজেপি কৰ্মীয়ে অন্নখনত বহিছে। কানি কানি পিতৃৰ ন্যায় বিচাৰিছে নিজৰ পুত্ৰৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দাত 11 অক্টোবৰত ৰহস্যজনকভাৱে অমন ত্ৰিপাঠী নামৰ ব্যক্তিজন সন্ধানহীন হৈছিল। ইয়াৰ দুদিনৰ পিছতে কেন নদীত উদ্ধাৰ হৈছিল অমনৰ মৃতদেহ। আজি পৰ্যন্ত অমনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন নহল আৰু ইয়াতে ক্ষোভিত হৈছে এতিয়া পিতৃগৰাকী। বিজেপি নেতৃত্বাধীন যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ দিনতে এতিয়া বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে ন্যায় বিচাৰি অন্বেষণ কৰিব লগা হৈছে। অমনৰ পিতৃ মাতৃৰ দাবী যে বিজেপি কৰ্মীয়ে যদি এনে দশা হয় তেতিয়াহ'লে আন লোকৰ কি অৱস্থা হ'ব। ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত উপবাসত থাকি অন্বেষণ কৰিব অমনৰ পিতৃ আৰু পৰিয়ালে। ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰাণ গ'লেও উপবাসত থকাৰ হুংকাৰ নিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীৰ। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত চলি থকাৰ দাবী আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেক যাদৱৰ। কিন্তু এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অন্নখনত বহিছে বিজেপি কৰ্মী আৰু নিজৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এয়া দাবী কৰি নিজ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অন্নখনত বহিছে বিজেপিৰ কৰ্মী। আৰু তেওঁলোকৰ কথা যে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে, তেওঁ নিজে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা, বিজেপিৰ নিজৰ কৰ্মী হয় আৰু তেওঁলোকৰে যদি এই দশা হয় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজৰ কি দশা হ'ব সেয়াও তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে নিজ কৰ্মীৰে। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ এজন কৰ্মী তেওঁ নিজৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এনেধৰণে চিতাভস্ম হাতত লৈ অন্নখনত বহিছে। हमारा बच्चा अमन त्रिपाठी 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मम्मी उसकी व्रत थी तो फल लेने गया था, लौटकर नहीं आया। काफ़ी फ़ोन करने के बावजूद उसने फ़ोन नहीं उठाया। 12 तारीख को एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन प्राप्त होता है और वो चौकी में जमा हो जाता है। उसके बाद हम गुमशुदगी लिखाते हैं, फिर उसी के मोबाइल के कॉल डिटेल से ये सारे आरोपी पकड़े जाते हैं और इन्हीं के द्वारा लाश बरामद होती है, इन्हीं के द्वारा कपड़े बरामद होते हैं और उसके बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। फिर हम आईजी साहब से शिकायत करने जाते हैं कि आरोपी क्यों छोड़ दिए गए, तो वो फिर हमको कोतवाली भेजते हैं। कोतवाली में हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, कहा जाता है कि आपके बच्चे की हत्या इन्होंने कैसे की है, आप कैसे कह रहे हो। हमने कहा ये बताइए आपको लाश और कपड़े किसने बरामद कराए हैं। सम्राट सिंह ने बरामद कराए हैं। इसका बच्चे का जन्मदिन था सम्राट सिंह का, और ये जन्मदिन के बहाने ले गया, उसकी निर्मम सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी। अब पुलिस इसको लीपापोती करके उसको डूबने का वो दिखा रही है बहाना, जबकि उसकी हत्या हुई। क्या किया है? पुलिस में टोटल लीपापोती की जा रही है और डॉक्टर की संलिप्तता इतनी भयंकर है कि उसकी जब हमने लाश देखी तो भयंकर जली हुई थी वो, और भयंकर चोटें थीं, और उसके चेहरे को ख़राब करने के लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद उसको फेंक दिया गया है। क्या किसी माननीय का भी कोई हाथ आ रहा है? हाँ, हमारे यहाँ के सदर विधायक है प्रकाश द्विवेदी, चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी रहा, मेरी पत्नी सभासद भी रही, और इस नाते चूँकि वो जो अपराधी हैं उनका जो बाबा है वो आरएसएस में है, तो ये सब दबाव बना करके विधायक जी भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले को ठंडा कर दो, नौटंकी ना करो और इनसे तुमको न्याय नहीं मिल जाएगा। भाई आप बताइए, मेरे बच्चे की हत्या हुई है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ
और मुझको न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, आप सरकार से योगी जी से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं योगी जी से यह अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पुलिस प्रशासन और ये मेडिकल जो डॉक्टर है, इसकी जो भ्रष्टता दिख रही है, संलिप्तता, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे मुझे पूर्ण रूप से न्याय मिल सके। ये अनशन कब तक चलता रहेगा? ये मेरे बच्चे की अस्थियां रखी हुई हैं, जब तक मुझको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा, चाहे मुझे प्राण क्यों ना निछावर करना पड़े।